वेलकम टू बनो आईएएस। और आज हम देखेंगे ये न्यूज हीट वेव्स इन इंडिया, इट्स कॉजेज एंड इम्पैक्ट। आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा कि द टेम्परेचर हैज टच्ड 50 डिग्री सेल्सियस इन सम प्लेसेस इन दिल्ली। तो चलिए जानते हैं हीट वेव होती क्या है और इनका इम्पैक्ट क्या होता है। हीट वेव की डेफिनेशन को देख लेते हैं। जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6 टू 6.4 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। और अगर ये टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाए तो उसे सीवियर हीट वेव कहते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके कॉजेस क्या होते हैं। हीट वेव के कॉजेस को ज्योग्राफिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस में डिवाइड किया जा सकता है। नाउ लेट्स लुक इनटू द ज्योग्राफिकल कॉजेस ऑफ हीट वेव्स। सबसे पहला कॉज तो है एल नीनो। अगर आप लोग एल नीनो के बारे में जानते हैं तो आप लोगों को यह पता होगा एल नीनो वो कंडीशन है जब ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन बिकम्स वार्मर देन द यूजुअल। जो नॉर्मल कंडीशन होती है पैसिफिक ओशियन में वो होती है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन बीइंग वार्मर एंड द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन बीइंग colder. However, during the El Nino years, this situation reverses, or it leads to changes in temperature and rainfall not just in Pacific but also in Asia. और जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के टेम्परेचर पर भी दिखता है। द सेकेंड रीजन फॉर दिस हाई टेम्परेचर इज क्लाइमेट चेंज। Climate change, as you know, is not only leading to increase in temperature but also humidity. और इस humidity का फर्क ये पड़ता है कि जब आपको स्वेट आता है it cannot evaporate and therefore जो टेम्परेचर होता है आपको उससे भी ज्यादा गर्मी महसूस होती है। देखिए इन्हीं दो नेचुरल कॉजेस को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी रिपोर्ट में भी नोट किया है। As you can see, it has mentioned climate change has led to rise in temperature and humidity, but it has also noted some human factors. Now let's look into the human factor. देखिए once again CSC की रिपोर्ट में एयर टेम्परेचर, लैंड सरफेस टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंशन किया गया है, पर साथ में इन्होंने दो फैक्टर मेंशन किए हैं, रैपिड इंक्रीज इन बिल्टअप एरिया एंड कंक्रीटाइजेशन। तो चलिए अब इन ह्यूमन फैक्टर्स को हम डिटेल में जानते हैं। नाउ व्हाट इज दिस ह्यूमन फैक्टर? दिस इज अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड इज a phenomena when the area in the city is warmer than the area nearby। एंड जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये जो टेम्परेचर है जो नॉर्मल एरिया में इस लाइन पर है, देखिए सडनली when we enter the city it shoots up like this and it once again decreases after you cross this urban area and this is called urban heat island। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है when we replace forest with concrete which absorbs more sunlight, also we install a lot more glasses, steel, which leads to higher temperature। at the same time once you construct a building, वो बिल्डिंग का सरफेस एरिया इज मच हायर देन द सरफेस एरिया ऑफ द लैंड, इसीलिए हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एंड इट लीड्स टू अर्बन हीट लाइनर। ऑल्सो as you can see we install these AC and all those things which while cool inside of the room they throw heat outside which leads to continuous building of higher temperature in the urban areas। after looking in the phenomena of urban heat island, let's look at the impact of the urban heat island। अर्बन हीट आइलैंड का जो इफेक्ट सीएससी ने नोट किया है वो ये है कि जो समर की नाइट्स हैं दे आर नॉट कूलिंग। नॉर्मली समर के डे में टेम्परेचर बढ़ेगा और नाइट में टेम्परेचर कम होगा ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट बाय द लैंड सरफेस। हाउएवर ड्यू टू दिस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट the nights are not colder, there is continuous increase in temperature which leads to stress and increasing risk of heat related illness and even death। now let's look at the impact of heat waves। सबसे पहला impact ये पड़ता है there is a heat absorption, heat stroke and aggravation of pre-existing conditions। अगर आप लोग न्यूज फॉलो अप कर रहे हैं तो आपने पिछले वीक सुना होगा शाहरुख खान वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक। सो दिस इज a phenomena happening across the country, so be careful about heat stroke, drink plenty of water। अब please note this that heat stroke while are harmful for everyone, there are some vulnerable sections like elderly, children and the worker who work outside, they are at higher risk from this heat wave। after looking at the human impact on human, let's look at on the impact of agriculture। देखिए हीट वेव की वजह से क्रॉप यील्ड का डिक्लाइन होता है, लाइव स्टॉक का इज एडवर्सली इंपैक्टेड एज वेल एज वाटर रिसोर्सेज कम डाउन। दिस कैन लीड टू क्रॉप फेलियर, वाटर स्कार्सिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इन दिस बैकग्राउंड वी नीड टू rely on climate resilient agriculture or cultivate crops like
pulses which need less water, etc. However, those will also be impacted from the heat wave. Now, let's look at the environmental impact. Heat wave leads to higher instances of forest fire, as you can see here. They also lead to environmental degradation because of soil degradation and decline in water resources, etc. At the same time, they can also lead to increase in loss of biodiversity. Therefore, they are also harmful for the environment. Now, let's look at the impact. CSE has noted that more than 20 states in India have already announced heat action plans. However, it has noted they mostly remain on paper and they are hampered by lack of funding, granularity, and sustainable vision for transformation. Therefore, CSE has advised for city-specific management plan and it has praised Ahmedabad's Cool Roof program. Therefore, we need local solution for heat wave and no grand plan can as such be made for heat waves. At the same time, we also need adaptation strategies. These include early warning system where people can be notified, urban planning. For example, in this picture on the right, you can see urban forest, how agroforestry, urban forest, watershed, etc. can help in cooling down the cities and reduce the risk from heat wave. At the same time, we need cooling infrastructure and community engagement to adapt with the heat wave incidences in the country. While adaptation strategies are necessary, we also need to mitigate. And the road to mitigation definitely goes from addressing climate change, reducing greenhouse gas emission, for example, using electrical vehicle, reducing energy consumption. For example, you can switch off lights when they are not in use, or working on energy efficiency of our electrical equipment to reduce energy consumption. Therefore, friends, always take individual action to reduce climate change. Thank you for joining this, and I will see you next time.